Hi, good morning everyone. Today we'll talk about BMS portal. Am I audible to you all? Can I get response on SAS please? Okay, fine. So we'll start with our BMS portal. See, I'll tell you about one added module which we have added on BMS portal, which is called as Manage SRR. See, you supposed to log in through bms.eton.co.in, which is our web address. See, this is our web address. I'll tell you over testing stage. I'll log in first. See, ये पोर्टल हमारा बिल्कुल सेम है as you do that manage VR, then manage book, report sections. This time we have added this manage SRR tab where we get two options, register SRR or edit SRR. First, we supposed to register the student. See, I'll show you one test details. Let's say a student called as Ruhi. Then the mobile number. All the star mark fields are mandatory. Then the address. Now these are the optional fields. You can leave it as it is, parent name and the parent mobile numbers. Then ICI registration number. See, here we have the type of SRRs. We have three types, admission, demo और registration. Let's say अगर student आपके पास सिर्फ demo के लिए आता है, so firstly select demo, then the batch details, whatsoever batch student has opted. We have two batches, May और August. कोई upcoming batch होगा तो add-on will add those things. So firstly I'll select May batch, then the subject. Let's say student opted for IPCC CAFM. Select the subject, then click on save. See, a message comes, data saved successfully. Click on OK. Now we'll move on to edit SRR. See, here are the details. Create date 22nd August. Click on edit. Let's say after a demo, student ने decide किया कि वो आपके पास registration करा लेगा या admission ले लेगा. तो firstly we'll select registration. अब suppose student ने registration demo तो CFM का लिया था, लेकिन वो registration आपके साथ accounts और law का भी कराना चाहता है. तो you can add those subjects also. और इनफैक्ट अगर आप CFM रिमूव करना चाहते हो तो वो भी आप डीसेलेक्ट कर सकते हो. Now the total fee, whatsoever fee amount for both these subjects. Let's say account is 10,000, law is 5,000. I'll input 15,000 rupees. This is the total fee of both the subjects. Now click on if any discount is applied. अगर कोई combo हो रहा है तो आप combo select करके कर सकते हो, otherwise normal. तो in our case we are giving normal discount of 2,000 rupees. What happened? I'll show it again. Registration, then accounts, law and CFM is removed. Pricing is 15,000. We have given a normal discount of 2,000 rupees. See, automatically due balance is 13,000. Let's say at the time of registration, आज की डेट पे स्टूडेंट आपको 1,000 रुपये देकर जाता है for both the subjects.
then you simply enter 1000, then select the payment mode and enter a receipt number. This receipt number will be the receipt which you generate via Increase portal. So let's say I have typed in 1111. Now click on save. Message comes, data saved successfully. Now again we move on to edit SRR. Click on edit. Now let's say at this stage student has opted for an admission. I'll select admission. Now the case could be, see at time of admission अगर student मई से अगस्त में शिफ्ट होना चाहता है, let's say वो आपके पास रजिस्ट्रेशन उसने मई में कराया और वो आके आपको कहता है कि आज की डेट में हम एडमिशन कराएंगे लेकिन अगस्त बैच के लिए कराएंगे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. So you can simply select August batch. And here you will type the ETN numbers of student. Let's say ETN 12121. Now the BMA registrations, yes or no. If it's done then yes, otherwise no. As I'll select no. Now in August batch, let's say student ने registration तो accounts law में कराया था, अब वो आपके पास एड ऑन CFM और टैक्स भी लेता है और आपसे बोलता है कि मुझे कॉम्बो चाहिए, तो हम वो भी ऑप्ट कर सकते हैं. लेट्स से आई सिलेक्टेड 4 सब्जेक्ट्स. सो टोटल फी विल बी, यू कैन चेंज दिस फिगर, लेट्स से 30,000 एंड अ कॉम्बो डिस्काउंट. लेट्स से कॉम्बो डिस्काउंट इज ऑफ 5,000. सी the due balance is automatically comes to 24,000. Now we'll take a next installment. Let's say now student has paid you 10,000. So your due balance come to 14,000. Cash, then again a receipt number as. Now click on save. See, this is all about, ये हमारा मैनेज SRR था जो आज तक आप लोग एक्सेल शीट मेंटेन करते आ रहे थे. उस एक्सेल शीट को एलिमिनेट करने के लिए हमने ये एड ऑन ऑप्शंस डाले हैं. इसमें वी हैव अ रिपोर्ट सेक्शन. सी अंडर दिस रिपोर्ट वी हैव SRR रिपोर्ट एंड SRR डैशबोर्ड. SRR डैशबोर्ड जो है ऑप्शन, ये बिल्कुल वैसा ऑप्शन है जो आपको एक्सेल शीट पे ऑप्शंस मिलती हैं और आप उसको अपडेट करते हैं. लेट्स से I'll select August, then I'll select a group called as IPCC, then type of SRR as admission. Click on go. See, you'll get the details like center name, accounts, law, the subjects, and below this subject line the figures. अभी जो आपके पास मैंने आपको डमी अकाउंट दिखाया एक स्टूडेंट का, उसने एक अकाउंट्स लिया था, लॉ लिया था, CFM और एक टैक्स लिया था. जो यहाँ पे 2 की फिगर आ रही है, दीज आर द जो हमने पहले डेटा मेंटेन किया था उसकी फिगर्स हैं. उसके बाद टोटल फी कितना आया स्टूडेंट से, देन डिस्काउंट फी हमें जो भी दिया, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट एंड द पेंडिंग बैलेंस. सी दिस इज द SRR डैशबोर्ड. नाउ देयर इज वन मोर ऑप्शन ऑफ SRR रिपोर्ट. This report will tell you about the student details also. Same SRR type as admission. Then click on go. See, here you will get the details of students. This is the details which I have filled in just now. रूही के नाम से किया था. देखो IPCC accounts, CFM, income tax, law. And यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा pendency. 14,000 is the pending amount. So this is about the SRR report. I hope everybody is clear about the process. Siliguri Center, whether BM is to be done after Increase portal registration? Yes, Siliguri Center. First you'll update the things on Increase portal, then you'll move on to BMS. अलवर सेंटर सेम जो आप अपना स्प्लिट बैच में अभी SRR में जो आप मैनुअली अपडेट करते हो ना, जिस तरह से वहां करते हो वैसे ही सेम यहाँ पे भी करना होगा.
Indore center means in SRR report one will observe the name of student several times. Yes, because he has opted several subjects. जितने भी subjects लेगा उतनी बार उसका record display होगा. Bevar, so we don't have to send Excel sheets. Yes, no need to send the Excel sheets. Your FSM will get the reports through this portal itself. धनबाद आगरा नेट ना हो तो क्या हम एक्सेल शीट में कर तो सकते हैं? धनबाद सेंटर, ये चीज आप अपने एफएसएम से एक बार कंफर्म कर लीजिएगा. हावड़ा, सम स्टूडेंट कैंसिल आफ्टर टेकिंग एडमिशन, सो हाउ वी कैंसिल देम? सी, अगर कैंसिल कराते हैं तो पहले आप इंक्रीज पोर्टल पे अपडेट करोगे ना फिगर्स को, तो इंक्रीज पोर्टल पे जब आप अपडेट कर दोगे तो उस अकॉर्डिंग आप अपनी एसआरआर में भी अपडेशन कर देना, जैसे आप एक्सेल शीट पे करते हो. अलवर सेंटर, डबल एंट्री नहीं करनी है, सिंगल स्टूडेंट ही होगा तो आप उसको एडिट करके आप अपना एसआरआर मेंटेन कर सकते हो. डबल एंट्री मींस लाइक आप डबल टाइम्स उसको क्रिएट कर रहे हो, बट डबल टाइम क्रिएट नहीं करना है. सिर्फ सिंगल टाइम आप उसको एंटर करो, पंच इन करो रजिस्टर के टाइम पे, और फिर एडिट करते रहो जैसे जैसे उसकी अपडेशन हो रही हैं. करनाल सेंटर, यस इट इज कंपल्सरी. आपसे यही अपडेट हुआ करेगा तो आपको इसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट जनरेट करनी है. Indore center, suppose the student pays us fee and after few days want to cancel admission, then what to do? इंदौर सेंटर, जैसे आप अपने एक्सेल में भी तो कैंसिलेशंस दिखाते होंगे ना, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भी अपडेशंस करनी है. सी, दिस इज द रिपोर्ट इज द सेम विच यू डू इन दैट एक्सेल शीट. एक्सेल का ही बाइफिकेशन है, कोई और मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड होंगी तो विल अपडेट दोज थिंग्स ऑल्सो. रेवाड़ी सेंटर, आपको कौन सा रिपीटेशन चाहिए? रेवाड़ी सेंटर, Revari for all, so we'll do one thing, we'll update the recording of the session on the portal. You can view from there. Any other queries of any center? सी सेंटर्स, ये वाली रिपोर्ट्स आज से कल से देनी है नहीं देनी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके एफएसएम से मिल जाएंगी. जैसे ही ये सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, यू विल स्टार्ट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. धनबाद सेंटर, अगर कोई स्टूडेंट आपसे कॉम्बो लेता है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि स्टूडेंट ने अकाउंट्स लॉ सीएफएम लिया है, फिर बाद में उसने सीएफएम रिमूव कर दिया है, तो वैसे ही आप उसको डीसिलेक्ट कर सकते हो. सी, ये डी सिलेक्शन वाला एस्पेक्ट मैं एक बार फिर दिखा देती हूँ. लेट्स से विल गो ऑन एडिट. सी, यहाँ पर एडमिशन स्टूडेंट का है, उसने 4 सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए थे. लेट्स से वो इस कॉम्बो में या तो एक सब्जेक्ट एड ऑन कराना चाहता है तो वो भी पॉसिबल है, या फिर वो अगर कॉम्बो को छोड़कर सीएफएम, लेट्स से एक सब्जेक्ट आपका ग्रुप 1 में से रिमूव करता है, तो आप यहाँ पर प्राइस उसके अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हो. लेट्स से प्राइस विल मूव टू 35,000, और अब कॉम्बो तो कोई बना नहीं, तो यू कैन सिंपली सिलेक्ट एज नॉर्मल, और जितना भी आपको डिस्काउंट देना है आप उस अकॉर्डिंग डिस्काउंट दे सकते हैं. सी, फिगर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो गई. अर्लियर इट वाज 14,000 और अब ये हो गया 21,000. गाजियाबाद सेंटर, एक्सेल शीट्स नहीं भेजनी है, बीएमएस का जो एसआरआर रिपोर्ट निकलेगा वही अब आपको सेंड करना है. बट कब से करना है, किस डे से किस बैच के लिए स्टार्ट होगी, ये चीजें विल इंटीमेट यू. सारे एफएसएम्स आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे. Chandigarh center, if someone is opting for group 2 IPCC combo but want to attend advanced accounts in August and audit and ITSM in November.
सी कोई भी उसको सब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे भी लेना है, आप अपने एक्सेल में भी तो वही चीजें मेंटेन करते हो ना, सेम वे में आपको यहाँ पे करना है। डिलीशन कैसे करनी है, एडिशन कैसे करनी है, वो मैंने आपको शो कर दिया है। हाउ टू रजिस्टर इन पोर्टल, पोर्टल में हम रजिस्ट्रेशन भी तो कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट रजिस्टर ना, रजिस्टर किया आपने एसआरआर के फिगर्स, उसके बाद आप उसके अंदर एडिट कर रहे हो जो भी चीजें एडिट करनी है। रिवारी सेंटर एक्सेल शीट नहीं अपडेट करनी है। सेंटर्स जो बैच शिफ्टिंग वाला एस्पेक्ट आप लोगों का डाउट आ रहा है, बैच शिफ्टिंग आई क्लियर यू। एडमिशन के बाद बैच शिफ्ट नहीं होगा। टिल टाइम रजिस्ट्रेशन तक बैच ट्रांसफर हो सकता है या शिफ्ट हो सकता है, लेकिन एडमिशन के बाद नहीं हो सकता। अगर ये चीज ऐड करानी होगी तो हम सीनियर्स के साथ डिस्कस करके विल ऐड अप दोज थिंग्स। विवाह सेंटर बैच स्प्लिट का भी ऐसे ही होगा। 4 सब्जेक्ट्स को आप अभी रजिस्टर करो और 3 सब्जेक्ट्स का यहाँ पे आप एडमिशन दिखा सकते हो। नागपुर सेंटर ये सेशन विल अपलोड ऑन द पोर्टल, बीएमएस पोर्टल पर अपलोड कर देंगे या एलटीएस पोर्टल पे, आप वहां से इसका दोबारा से रिकैप ले लीजिएगा। Ganganagar, how we can see all registered students in this report? See, I told you about the report section. Now, we have 2 types of report, SRR reports and SRR dashboard. Let's say I have selected SRR report, August batch, then IPCC, then type of SRR. Let's say admission, click on go, then you can export it to Excel. See, this is the report in Excel, which you manually prepared, portal has generated automatically. Fine, so you can send these details to your FSMs. Ludhiana Center, subject dropout is possible after admission also. I showed you the changes ना, जो changes होते हैं आप एडिशंस भी कर सकते हो, डिलीशंस भी कर सकते हो, बट ट्रांसफर नहीं कर सकते हो बैच को। अगर एक बारी अगस्त में आपने एडमिशन कर दिया तो फिर आपको उसी से ही वो मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इंदौर सेंटर, यू कैन गेट दिस एक्सेल शीट फ्रॉम दिस एक्सपोर्ट टू एक्सेल टैब। गोरखपुर सेंटर इंटीमेट कर दिया जाएगा जब भी स्टार्ट होगा। Okay, I'll tell you one more option of center transfer कैसे होगा, right? See, I'll create one more registration. Let's say by the name of Richa, then the contact number. Now the address. Email address. Then type of registration. Let's say registration will do first. Then select a batch. Select advanced accounts and accounts. No discount we have offered. Now we have received 5,000 rupees as first installment. Payment mode is cash. Receipt number. Then click on save. Now again move on to edit SRR. Then click on edit. Now while converting a student into admission,
See, system asked you about the transfer status of student. See, this is the option, transfer status, no or yes. If you'll select yes, then system would ask for the destination center. So you can select the destination center from here itself. Let's say I select Dehradun. Now I'll select the rest amount. Let's say 15,000 is the balance amount. Okay. See, this is the message. Please insert ETN number because while converting a student into admission, ETN number डालना mandatory है. ETN, ये ETN जो आप increase portal से generate करेंगे. And the BMA registration. Now click on save. See, data saved successfully. Now when we move on to report, it will show you about the transfer status. First we'll check dashboard report, then SRR report. See, here it showed only in Agra Center IPCC accounts 1, then advance accounts 1. But in SRR report, you will get the status of transfer center also. Click on go. See, this is the transfer status. I'll export it to Excel. Records were not shown. Just a second. I don't know why the students' records were not displayed. Just a second. Now I am checking it. Just a second. I'll create a new test account. I'm showing you the transfer process again. Let's say accounts, then total fee is 10,000, no discount offered, first installment is 1,000 rupees, payment mode as cash. Now click on save. Now we'll move on to edit. See, from here we can search a record of our student also. See, only test records were displayed. Click on edit. Now we'll convert this student as admission. Punch in the ETN number. Now BMA registration, let's say no. And the center transfer as yes. Okay. Now we'll select the center, let's say Delhi center, and the payment
Let's say student has paid you 4,000. And in fact, in this moment, if you want to add up a subject also, then you can do that. Let's say CFM also, then you can make the updations. See, this is the 10,000 is the balance amount. Now click on save. Now we'll move on to SRR report. August, then our group of IPCC, and then admission. Now we'll click on go. See, we get the results of test. See, transfer center's name and the status. Then the same way, pending balance is 10,000. So this is how you can do a transfer process. Any other query of the centers? Moga center, I didn't get your query. मुजफ्फरपुर, नो, यू वोंट यूज दैट एक्सेल शीट, बट अभी नहीं पता कि कब से स्टार्ट होगा ये प्रॉपर अपडेशन. सेंटर एफएसएम्स आपको इन्फॉर्म कर देंगे जो भी अपडेशन जिस दिन से भी स्टार्ट होंगी. ग्वालियर सेंटर ट्रांसफर इन प्रोसेस आपको अपडेट नहीं करना है, वो एसआरआर में ऑलरेडी जो सेंटर्स हैं वो अपडेट कर देगा. जैसे अभी हमने कालका जी सेंटर में आगरा से कालका जी में अपडेट किया तो कालका जी के लिए ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया, मतलब उसको इसकी एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है. Chanmari Center, please specify the difference between registration and admission. Can't we click admission instead of registration? Chanmari Center, yes you can do that. वो तो depends ना कि आप पहले registration हम तब करते हैं जब स्टूडेंट कोई टोकन अमाउंट लेकर आता है या इंस्टॉलमेंट फी लेकर आ रहा है. एडमिशन हम तब करते हैं जब बच्चा आपके पास प्रॉपरली लाइक एनरोल हो रहा है आपके सेंटर पे आके. Indore Center, if any student moves from category C to A, then what fees will be referred in the SRR? Fee will be considered as a category because higher category हमेशा consider की जाती है. सी सेंटर्स इतना कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. डिफरेंस इज लाइक सिर्फ सिंपल इतना है कि जो आप लोग मैनुअली एक्सेल शीट मेंटेन करते हो ना, उसकी जगह आपको इस पोर्टल पे अपडेशंस करनी है. बाकी और कोई अपडेशंस या कुछ डिलीशंस ये सब चीजें जैसे आप एक्सेल पे करते आए हो ना आज तक, वैसे ही आपको इस पे करना है. दिस इज द सिंपलेस्ट वे आउट. धनबाद सेंटर इंक्रीज पोर्टल में एडमिशन को कैंसिल करते हैं तो क्या वो वहां से हट जाती है या उसे बाद में हटाया जाता है? सेंटर्स जब भी हम कोई कैंसिलेशन इंक्रीज पोर्टल में भी करते हैं तो वो प्रॉपरली डिलीट नहीं होता है, सिंपली रिफंड होती है वो एंट्री. वो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट करता है. अगर कोई जेन्युइन रीजन होता है तो गलती से क्रिएट हो गया या स्टूडेंट ने ड्रॉप आउट ले लिया या कुछ, तो भी वो डिलीट नहीं होता है. डिलीट कोई एंट्री नहीं होती है, सिर्फ रिफंड होता है. So I believe we can finish the session here itself. जो भी queries होंगी वो आप मुझसे बाद में verbally over phone call पूछ लीजिएगा. बाकी जिसको ये ट्रेनिंग दोबारा देखनी थी उनके लिए ये रिकॉर्डिंग हम दोबारा मतलब लाइक पोर्टल पे अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप देख लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.